Hi, so this is the second version of Market Watch, and we are going to do a quick analysis. So as in the morning हमने नाम इंडिया IRCTC HDFC AMC और एल्केम इसमें हम लोग कुछ ट्रेड लिए. अभी हम देख सक रहे हैं कि ऊपर से कुछ सेलिंग आई है नाम इंडिया एल्केम और HDFC AMC में, विच इज़ ओके. हेवल्स इज़ अनदर कंपनी जो अभी बहुत अच्छी एक मूव दी है. दिस वाज इन अ बॉक्स, और ये हमने वीकेंड लास्ट वीकेंड को डिस्कस किए थे, हेवल्स और सीमेंस, ये दोनों कंपनीज को. और गोइंग फॉरवर्ड हम देख सक रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट एंड द रेंज, एंड इट्स ऑल्सो गेटिंग इन ट्रेंड. So maybe Havels is a very good candidate for BTST, though it's 1 o'clock. Going forward अभी भी 2.5 घंटा बाकी है, लेकिन फिर भी Havels बहुत अच्छी लग रही है. एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर ग्रैन्यूल्स. तो ग्रैन्यूल्स में ट्रेंड थोड़ी सी वीक हो रही है. इंडस टावर ने भी बहुत अच्छा एक मूव दिया. हमने सुबह डिस्कस किया था कि हाउ 240 इज़ अ रेजिस्टेंस जोन एंड इज़ वेरी नियर द रेजिस्टेंस. मे बी प्रॉफिट बुकिंग विल कम एट दिस लेवल्स. डिविस लैब भी हमारा मॉर्निंग पिक था, एंड सो वॉज जिंदाल स्टील. हमने स्टील सेक्टर को बोला था कि वो उतनी भी ख़राब नहीं दिख रही है, एंड जिंदाल स्टील वॉज एबल टू break 400 levels, and here you can see this is also a very good BTST candidate depending upon how it closes. हमने बाटा इंडिया में ट्रेड लिया था और ये बहुत अच्छी एक मूव दी towards 1630 फ्रॉम 1600 लेवल्स, और ये हम लोग लास्ट इस दिन से ही हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे. सो बाटा इंडिया वॉज ऑल्सो अ गुड ट्रेड ऑफ 2% इंट्राडे, विच इज़ लाइक ऑसम फॉर मी. DLF में भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड DLF has been rising, consolidating, and we took a trade on this breakout yesterday. Today also it seems like the trend is still in motion, and there are positions which are getting added. और बायोकॉन भी एक कंपनी है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, या एग्जैक्टली हियर. सो बायोकॉन में भी आज बहुत अच्छी एक मूव आई, और ये 400 हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए थे. फिर यहाँ पे हम लोग 395 398 में घुसे थे, and today it went towards 413, and right now it's trading at 413. so ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड थी, और मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था 410 तक जाएगी ही, and this is exactly where it went. And I think this has something to do with the results which is going to come on 22nd, I guess, if I'm not wrong. और बर्जा पेंट में भी हमने सुबह डिस्कस किया था, उसमें भी अच्छी मूव आई है. और सीमेंट कंपनीज में अल्ट्रा सीमेंट, ACC और अंबुजा सीमेंट, ये सब हम लोग 2 सेशन से ही ट्रैक कर रहे हैं. और going forward you can see positions. Bajaj Finance is looking for a very good short candidate from here, अगर if it breaks this levels, क्योंकि ऊपर से जब ये ऊपर जाती है 6200 में इसकी अच्छी सेल ऑफ आती है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन बजाज फिनेंस. RBL बैंक भी वीक दिख रही है. L&T फाइनेंस हाउसिंग, इस पर मैं एक्सप्लिसिटली एक वीडियो बनाया हूँ, और वो आप जाके मेरे YouTube चैनल में देख सकते हो, या आई हैव ऑल्सो ट्वीटेड टुडे इन माय ट्विटर हैंडल. वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वाई दिस इज़ सच अ गुड कंपनी फॉर, वाई दिस इज़ सच अ गुड ट्रेड, एंड वाई दिस इज सच अ गुड ट्रेड. इसमें हम ले सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म. Dr. Reddy भी towards day low है, and maybe this 5400 is going to be broken. So Dr. Reddy और ONGC भी is trying to gain towards 118 levels. जो एक वो बॉक्स में थी, कल एक ब्रेक डाउन आया, आज वो फिर उस बॉक्स में घुसने की कोशिश कर रही है. एंड ऑल्सो ABFRL is looking weak, and maybe it will try to go towards 220. BPCL is weak, so it's a very good short candidate with any weakness in Nifty. And Wipro maybe एक doji formation हो रही है, this is not good, and maybe there is some more weakness going forward in Wipro. We were able to track Wipro from here this day, एंड हमने ये ट्रेड लिया कल, और आज जाके हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन इट सीम्स लाइक इट्स वीक, एंड सो वी हैव टू सी, बिकॉज आज IT ऐसी भी नहीं चल रही है, एंड दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सप्लिसिटली इन द मॉर्निंग वीडियो, जहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली बोला था कि IT से आज दूर रहिए, एंड दिस टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन. So Mindtree भी आप देख सकते हो, there was absolutely no move. I think Mindtree is in a very good position, so maybe it will consolidate a little bit, and then it will go for a new high. So it's like IT is weak for today. We don't know how the positions are going to be tomorrow, right?
Torrent Pharma, this is always facing resistance at 3030 levels and 3050 levels, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ positions बन रही हैं. We have to see in which direction these positions are getting made, and from the looks of it looks like it's on the weaker side, and so is also Cholafin भी 515 में support लेके 510 तक गई थी, 510 support लेके भी 515 types आ गई है. Asian Paints is weak, and this is a very good short candidate, and so is Amraja Batteries. These are all weak counters, and right now we can see that there are a lot of weakness in the market, right? यहाँ पे आप देखो every most of the companies, they are in trend, just like ICICI, Aisha Motor, Bank of Baroda, HCL Tech was wow, ये देखिए. So this is exactly, why you should be monitoring these structures and trying to take a trade, and not move, not a trade when it's moving up. LTI maybe आप देख सकते हो. So basically here you can see there are so many IT companies. LTTS is over here, right? Tech Mahindra is over here, and this was exactly what I said at 9:30, 10 o'clock in the morning today. Stay away from IT. IT is not going to work today, no matter what people and experts are all saying, because data formation वैसे है. Bandhan Bank was a good short trade we took, and ये भी हम लोग सुबह identify किए थे. अभी Bank of Baroda, AU Bank, और यहाँ पे Emphasis भी IT में देखिए weak है. Trent, we identified Trent as a very good short candidate from yesterday. वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी the video, and this is exactly a very good trade opportunity we got today. और इसमें हम लोग 910 से शॉर्ट करके बैठे हैं. अभी हम मेरा है 902. अगर 902 में आया तो I will my automatic positions will get square off, and let's see, because this is also at a day's low of 898, so right now 890. McDowell is a very good reversal candidate. ये एक बेस में आके एक डोजी फॉर्मेशन कर रही है, सो मैकडोवेल्स विल डेफिनेटली बी इन माय रेडार. IGL इज़ वीक, एंड सो इज़ MGL ऑल्सो. हम लोग 2 दिन पहले MGL को शॉर्ट किए थे. और श्री सीमेंट इज़ ऑल्सो लुकिंग वीक, एंड इट सीम्स लाइक पोजिशंस आर गेटिंग एडेड. वी हैव टू सी इफ इट्स एबल टू मेंटेन 2800 लेवल्स फ्रॉम हियर. एंड या, सो अगर आप सेक्टोरियल वाइज देखना चाहते हो, so this is how financials are placed. So a lot of in the top branch, but definitely आज हम लोग सुबह जैसे बोले थे कि don't go for banks आज टोटल वीक थी. ICICI बैंक at day low, right, IndusInd Bank at day low, so Axis Bank at day low, so State Bank of India at day low, exactly. So basically आज सुबह ही हमने बोला था कि stay away from banks for sure, और HDFC Bank, Bajaj Finance, you see the upper week over here, right? So it looks really bad, और इसलिए हम लोग सुबह 10 बजे बोले थे कि the Nifty 50 is looking weak, and absolutely from the positions there was no logic of why one should be making longs आज. और इसमें भी कुछ है नहीं, और दैट वाज ऑटो. और इसमें सीमेंट में भी कुछ है नहीं, दो सीमेंट में हमने कुछ अच्छा ट्रेड्स लिए थे, ग्रॉसिम, अंबुजा और श्री सीमेंट. एक्चुअली श्री सीमेंट एज वी डिस्कस्ड ये 2800 में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है. और Havels is one of the good companies which I am tracking for BTST, and this is definitely in my radar. और Havels के बारे में हमने वीकेंड में डिस्कस भी किया था. So definitely keep Havels in your list. And let's go quickly. Here we have all the ITs. See, IT यहाँ पे पूरा नीचे ब्रांच IT का है. Stay away from IT. That's what I told you at 10 o'clock. Steel अच्छी placed थी since morning, but now it seems like it's actually losing momentum. Exactly. See, pharma. At least we were able to segregate one sector. This was pharma, and the second one was steel. So pharma में आप देख सकते हो BIOCON LUPIN, Divi's Lab, Glenmark. So these are few of the companies जो आज अच्छी move दी है. Unfortunately, Torrent Pharma was not able to take part in this run, but maybe some other day, because we have a Torrent Pharma where positions are getting added, and it's see Dr. Reddy is weak.
as there are sell-offs, and so is Torrent Pharma. So Torrent Pharma is below 2990 levels, and Torrent Pharma is looking really weak, and it's absolutely possible that it can fall and correct towards 2900 in the short term. So these are the stocks which are actually trending. So Bata India was another one which we have earlier discussed. Other than that, Idea is also trending in a small box of 9.5 and 9. And the ones which are really strong are HDFC AMC. This is it went towards 3300, and unfortunately right now it's so, but HDFC AMC should be in your BTST list. The result is on the weekend, so I am already out. I am not carrying any position, but if you want to take some risks, maybe this is also some other company which you can see. IRCTC is towards 2400, and it seems like as getting more in trend. There might be a small profit booking from these regions, but no matter what, this is looking and getting in strength, and so is Havels as well as Nam India. And if you look in the below, so Coromandel हमने 900 से किया था, ये 860 तक आ गई है. And see, this is how a trend analysis is software is absolutely so helpful in taking the trades. हम लोग Coromandel 2-3 दिन से हम लोग इस पे short करके बैठे हैं 900 level से, and see today it's at 860, so that's like a 4% move in Coromandel, right? And I don't know whether this is news based or anything, but because in trend analysis you have to just get the trend right. Once you get the trend right, and once you understand the positions, then it's just go ahead and make go ahead and make your position as the money is there. Similarly, Bandhan Bank is also weak, and this was what we had earlier discussed. It seems like there's more weakness in Bandhan Bank. I know there was some news flow in Bandhan Bank today, and I don't really know explicitly about the news, but I know that there is some news flow. And a very good candidate for reversal is MCDOWELL, and I think this is something which I will also track for reversal. So thanks a lot, guys. Hope this whole video was helpful for you, and yep, best of luck. So I think all the BTST trades have been discussed explicitly, so now it's up to you to track them and make sure that don't please consult your financial advisor before any trades. Thank you.